Good morning, students. How are you? Once again, welcome in history class. Our fifth chapter is going on print culture and the modern world. And previous video we have discussed about the 19th century, and how the women, workers, and children started the reading because that time literacy level increased in the Europe. And we have discussed how the innovative ideas came that time, how the printing press came to India. These are the ideas we have discussed, and about the religious reforms and debates also, how the newspapers spreading the ideas. So today we will discuss about the new topic, new forms of publication, and which new forms also developed in Europe. So firstly we will see novels. Novels developed in Europe. And what happened when novels will develop in Europe? Provide user new world of experience, gives ideas about diversity of human life. यानी कि when the novels were producing, यानी कि when people started the reading of the novels, so what happened? Now people were experiencing their ideas from one person to another person, and diversity means different ideas relating to the human life. Other forms of literature, not only novels published that time, other forms also developed. Lyrics, we can say that गीत के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों के थ्रू, एसेज on social and political matters, and essays mainly published on they were showing the which issues about the related to social and political issues. With the setting up of printing press, when the printing press developed, what happened? Visual images could be easily reproduced. Visual images could be easily, now with the help of the printing press, they can easily paste the pictures also, and they can circulate in the large quantity. And painters like Raja Ravi Verma, who was the famous painter that time, Raja Ravi Verma, produced image for mass circulation. Mass circulation and when those paintings produced by the Raja Ram Mohan, and that paintings reached to a large number of people. They were using, and cheap prints of that time, with the help of printing press, what happened? Cheap prints also available, and calendars was easily available now. Now printing press became very cheap, यानी कि सस्ती हो गई, तो what happened? Now calendars produced in the large quantity, so poor people would buy these and decorate the wall. तो गरीब लोग क्या करने लगे? उन कैलेंडर्स को, उन जो चीप पिक्चर्स थे उनको परचेज करके कहाँ पर हैंग कर लेते थे? अपनी वॉल पर, दीवारों पर. By 1870s, caricatures and cartoons were being published in newspaper and journals which commented on social and political issues. कैरिकेचर्स क्या होता है? एक तरीके से व्यंग्यात्मक चित्र, जैसे किसी को हम दिखाते हैं कार्टून के थ्रू कि उसके किसी के ऊपर उपहास कराना हो, यानी कि हंसी मजाक के थ्रू. और कैरिकेचर्स और कार्टून्स के थ्रू क्या था, किसमें पब्लिश होते थे? न्यूज़पेपर में एंड जर्नल्स में, बीच कमेंटेड. और क्या था उस समय की, जो लोग सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर एक कमेंट किया, एक व्यंग किया गया कि कैसे हमारे इंडियंस लोग ने वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट कर रखा है, कैसे उन्होंने वेस्टर्न कल्चर या उनका जो इंटरेस्ट है, जो वेयरिंग ऑफ स्टाइल है, कैसे लोगों ने कपड़े पहन रखे, उसके ऊपर. और साथ के साथ इस चीज के ऊपर भी कार्टून के थ्रू शो किया गया कि उस समय हम कैसे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ फेस कर रहे थे लोग यूरोप के अंदर, विच पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स. नाउ वीमेन एंड प्रिंट, लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वीमेन began to be written. Women readers increased especially in middle class. Now liberal husband and fathers, what they have done, they have started to give the educations to their daughter and wife. यानी कि जो लिबरल उदारवादी जो पिता और जो हस्बैंड थे, उन्होंने क्या किया, अपने घर से स्त्रियों को पढ़ाना शुरू किया. और मिड 19th सेंचुरीज में आते आते क्या हो गया था वहां पर? देयर वर सेट अप मेनी स्कूल्स आल्सो फॉर द वीमेन्स. And what happened? Or especially which class? Middle class started reading increase, especially in middle class. Journals began written on importance of women education. और journals में किसके ऊपर फोकस किया गया कि why the women education is important, कि why women should start the study. But not all families were liberal, but that was not welcomed by all the families, यानी कि all were not in favor. Some conservatives Hindu, कंजर्वेटिव ना जो रूढ़िवादी लोग हैं, तो डोंट बिलीव इन द सम चेंजेस शुड बी देयर इन द सोसाइटी. कंजर्वेटिव्स हिंदू बिलीव इफ ए हिंदू वीमन या हिंदू गर्ल लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड, अगर कोई हिंदू लड़की
या कोई स्त्री पढ़ेगी तो क्या होगी, वो जल्दी विधवा हो जाएगी। और मुस्लिम लिव, और जो मुस्लिम कंजर्वेटिव्स थे, व्हाट दे थिंक, एजुकेटेड वीमेन वुड स्टार्ट रीडिंग उर्दू रोमांस एंड बिकेम करप्ट। यानी कि जो उर्दू रोमांस यानी कि उर्दू की रोमांस वाली कहानी पढ़ेंगी जो मुस्लिम महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, तो क्या हो जाएंगी, जल्दी करप्ट। करप्ट का मतलब किस में पढ़ जाएंगी, प्यार मोहब्बत की किस्सों में पढ़ जाएंगी, यानी कि उपन्यास पढ़ने से वो लोग करप्ट हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस द हाउ द सम प्रोमिनेंट वीमेंस contributed in the print culture. Many women contributed to print culture, यानी कि how the women also contributed in the print culture. First we can see the example Rasundari Devi. Rasundari Devi belongs to East Bengal. She was a young married girl in a orthodox family. She learned to read in secrecy in her kitchen, and what happened after that, she wrote autobiography. And what was the name of that autobiography? Amar Jeevan, and it was published in 1876. Autobiography, a person's is written, there is own life story, an author by written own self, अपनी ही story अपने बारे में लिखे, that is called autobiography. Nobody will write down, खुद अपने बारे में लिखे. It was published in 1876 and it was the first full length autobiography in Bengali language. So it means many women contributed to print culture. Among them one Rasundari Devi. Rasundari Devi belongs to East Bengal and she belongs to a very orthodox family, young married girl, and how to learn in secrecy her kitchen. And she after that, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने की तो आजादी नहीं थी, तो छुप छुप कर किचन में पढ़ती थी. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उसने अपने ही बारे में, अपने जीवन के बारे में अपने लिखी आत्मकथा, and that was the name of autobiography Amar Jeevan, and it was published in 1876 and it was the first full length autobiography in Bengali language. Second example we can say that Kailash Basini Devi also belongs to Bengal. In 1860 what he wrote, she wrote highlighted the experiences of women, यानी कि highlighted the experiences, यानी कि she highlighted the experiences of women, यानी कि which type of experiences women faced that time. Firstly, in prison at home. In prison मतलब घर में ही उनको क्या किया जाता था, बंदी बनाकर रखा जाता था. Kept in ignorance, it means they cannot read and write openly, यानी कि उनको अनपढ़ रखा जाता था. Forced to do hard domestic work, यानी कि they will do all the household work, nobody will help, and treated unjustly by the same people for whom they serve, और उन्हीं के लोगों के द्वारा उसको दुत्कारा जाता था या अन्याय किया जाता था जिनके लिए वो पूरे दिन भर काम करती थी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए. तो यानी कि कैलाश बासिनी देवी ने 1860 में किस मेन इश्यूज को हाईलाइट किया है एक्सपीरियंसेस ऑफ वीमेन को, कि कैसे वीमेंस इम्प्रिजन एट होम, kept in ignorance, forced to do hard labor in domestic work, and treated unjustly by the same people for whom they served. Tarabai Singhe and Pandita Ramabai wrote in 1860. Both belongs to which city? Maharashtra. Miserable मतलब bad condition. Lives of upper caste Hindu women. इन्होंने किसके ऊपर लिखा है कि अपर कास्ट की जो हिंदू विमेन है कि वो कैसे रहती थी, और स्पेशली विडो, यानी कि दैट टाइम विडोज कंडीशंस वर नॉट गुड, दे वर नॉट लिविंग इन द प्रॉपर वे, दे वर नॉट ट्रीटेड वेरी इक्वली लाइक ए अदर वुमेन. बेगम हुसैन 1926, शी वॉज ए फेमस एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेरी फिगर. डिसअप्रूव्ड मीन्स होता है डिसलाइक करना, नापसंद. मैन फॉर विद होल्डिंग का मतलब हम वी कैन से दैट रिफ्यूज, किसी चीज के लिए मना कर देना. डिसअप्रूव्ड यानी कि डिसलाइक. मैन फॉर विद होल्डिंग यानी कि रिफ्यूज एजुकेशन फ्रॉम वीमेन, उन्होंने इस चीज को नापसंद किया कि कैसे मैन एक वीमेन को एजुकेशन देने के लिए किसके नाम पर मना कर सकते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन, की धर्म के नाम पर. तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मेनली फॉर एजुकेशनिस्ट राइटर्स वीमेन, they have written about the how which type of experiences faced by the women. Now we will discuss the next topic. Print culture and women education. We know very well Urdu, Bengali, Marathi, Tamil. Print culture also developed, but later
Hindu print culture also developed seriously, started in which year? But Hindu print culture developed in which year seriously? After the 1870. And from, we can say that from the 1870s. In the 20th century, journals edited by women, and they have focus about the women. They have focus about the women educations, widowhood, widow remarriages, and significance of national women. And from the 20th century, journals edited, and they were telling about the women's topic. They have taken the women's topic. Which type of? How women's education, widowhood, widow remarriage, significance of the national women. Now books for women. Punjab, Ram Chadha published the fast selling books. That was the name of book, Stri Dharam Vichar. Ram Chadha belongs to Punjab, and which book published by him? Stri Dharam Vichar. That was the fast selling. Fast selling का मतलब होता है जो ज़्यादा स्केल पर मतलब बिकना बुक का. And in that book, what is given? To teach women how to be obedient wives. यानी इन दैट बुक, इस बुक के अंदर क्या सिखाया गया कि वीमेंस को कैसे एक ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी बीवी बनना चाहिए. द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ऑल्सो पब्लिश द सेम टाइप्स ऑफ चीप बुकलेट्स at the same message they were also carried ki how the women behave properly, and these books were very popular among the women. Batala House, Batala was an area in central Calcutta. Where is the area Batala? Central Calcutta. They were also published the cheap books, or which type of books they published? Mainly novels and religious scriptures. They have written about the novels and religious scriptures, and they have written on the we can say that the colored lithographs and woodcuts. And these books were also famous among the housewives. Print and the poor people. यानी कि how the print reached to the poor people. Madras in 19th centuries, a very cheap small books were brought to market and sold at crossroads. Crossroad का मतलब था चौराहों पर बिकना. So the poor people could purchase them. यानी कि क्या हुआ मद्रास में 19th century में very cheap small books were brought to market. सस्ते दामों पर बुक्स को कहाँ लाया गया? मार्केट में. एंड सोल्ड एट, और उनको कहाँ पर बेचा जाने लगा? चौराहों पर. सो दैट पुअर पीपल कुड परचेज, ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद कर पढ़ सके. पब्लिक लाइब्रेरीज वर ऑल्सो सेटअप हियर इन द 20th centuries, एंड सुदर्शन चक्कर पब्लिश्ड हिज पोएम्स. यानी कि इन द 20th centuries व्हाट हैपेंड हियर, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरीज वर ऑल्सो सेटअप, एंड सुदर्शन चक्कर पब्लिश हिज पोएम्स इन ए कलेक्शन. यानी कि सुदर्शन चक्कर ने जो अपना बुक जो पब्लिश किया, जो पोएम्स का कलेक्शन, वो किस नाम से फेमस हुआ? सच्ची कविताएं. दैट वाज रिटन बाय सुदर्शन चक्कर. In 1930 in Bangalore, we can see that cotton mill workers also set up libraries to educate themselves. Now we will discuss the next topic. Print and casteisms. From the late of 19th century, issues of caste discriminations began to be written in many printed tracts and essays. Tracts, we can say that like a pamphlet that is printed about the religious and political matters that time, and essays also. Yani they were taking any one particular theme and they were writing. And Jyotiba Phule wrote about the injustice of the caste system. Yani Jyotiba Phule wrote about the injustice of the caste system, or in his book Gulamgiri. Yani that topic written in which book? In Gulamgiri, or that was published in which year? 1871. Yani Jyotiba Phule wrote the book. What was the theme? Injustice of the caste system. In his book, what was the book name? Gulamgiri. 1871 it was published. From the late of 20th centuries, B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy. Yani B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy wrote about the casteisms. Yani they also wrote about the casteisms and their effects. And their writings were read by people all over India. Yani when they wrote about the casteisms, yani their writings read by all people all over India. Kasi Baba, who was Kasi Baba? Kasi Baba was a Kanpur mill worker. Wrote and published. Which book wrote? Chote aur Bade Ka Sawal. That book is very famous, and that it was published in 1930
A. We suggested link between caste and class exploitation. And in that book, what was the theme given? Links between caste and class exploitation. कि कैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ कैसे क्लास एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंट एंड censorship. Before 1798, colonial government was not concerned about censorship. And before the 1798, colonial government was not concerned about censorship because early measures were against Englishmen. जो उन्होंने सेंसरशिप के लिए सबसे पहला जो स्टेप लिया किसके खिलाफ लिया? इंग्लिशमैन. व्हाई? एज सम इंग्लिशमैन क्रिटिसाइज द misrule of company in India. Before 1857 in India, who was ruling from the British side? ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यानी कि मैनी इंग्लिशमैन क्रिटिसाइज, यानी कि उन्होंने आलोचना शुरू करना किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हाउ द मिस इंडिया कंपनी इज रूलिंग, यानी कि मिस रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया. एंड कंपनी वाज वरीड. इस बात को लेकर कौन वरीड हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 13 दिसंबर 1600. By 1820, Calcutta Supreme Court passed one rule to control press freedom, and company encouraged those publications that would say good things about the company. It means Calcutta Supreme Court passed one regulations. They want to control the press freedom, and company encouraged for those publications that would say good things about the company. यानी कि वो उन्हीं पब्लिकेशंस को इंकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी जो किसके बारे में लिखते थे? कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें. इन 1835 एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर वी कैन से दैट इन द लोकल लैंग्वेज, gave petitions का मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट. इन 1835 एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर gave petition मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट टू गवर्नर जनरल. हु वाज गवर्नर जनरल दैट टाइम? लॉर्ड विलियम बेंटिंग. He was agreed to revise press law when the editors of English and the vernaculars gave one formal request to the Governor General. So it means Governor General was agreed to revise press law. Thomas Macallum formulated new laws that restored earlier freedom of press. यानी कि Thomas Macaulay was a liberal person. So what he have done? Formulated new laws बनाया that restored earlier freedom of press, यानी कि दोबारा से जो फ्रीडम उनको मिली हुई थी वापस मिल जाए एडिटर्स इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस को. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी कैन से दैट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस अगेन चेंज. यानी कि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम प्रेस अगेन चेंज. व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिवॉल्ट? Vernacular newspapers became nationalist. यानी कि after the revolt of 1857, vernacular newspapers became nationalist. National, now they were printing, they were writing about the national feelings and they were motivating the people towards their country, about a country India. So Englishmen wanted measures to control what was printed. So now the Englishmen wanted what should be printed in the newspaper. It should be controlled. कि क्या प्रिंट होना है क्या नहीं होना है वो उनकी परमिशन से होगा. इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास. अकॉर्डिंग टू दैट हु विल कंट्रोल नाउ ऑन द प्रेस? ब्रिटिशर्स. एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑन आयरिश प्रेस लॉ. नाउ व्हाट वाज हैपेंड? गवर्नमेंट केप्ट ट्रैक्स ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स. अब गवर्नमेंट क्या करने लगी? नजर रखने लगी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पर. If a newspaper was found printing something that could inspire people, अगर कोई न्यूज़पेपर पाया जाता है कि उसने किसी अपने कंट्री के लोगों को मोटिवेट किया है नेशनलिज्म्स के लिए, देशभक्ति के लिए, तो न्यूज़पेपर वाज वॉर्न. फर्स्ट टाइम दे वॉर्न, उनको वार्निंग की जाती थी. इफ दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगर वो बार बार उसी चीज को कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंड? यानी कि वर्नाकुलर पब्लिकेशंस वाज सीज. उसको पूरे पब्लिकेशंस को क्या कर दिया जाता था? वर्नाकुलर को जब्त कर लिया जाता था. Despite repressive measures, and the Englishmen they have started many repressive measures, but vernacular newspapers used to write about colonial misrule in India. उसके बावजूद भी वो लिखते रहे कि कैसे कंपनी इंडिया के अंदर मिसरूल कर रही है, colonial misrule. This lead to protest. For that purpose, movement started.
पंजाब रिवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907. डिपोर्टेड का मतलब एक्सपेल कर देना, बाहर भेज देना देश से. तो तिलक रोड इन दैट, तिलक रोड इन न्यूज़पेपर केसरी, दैट वाज फेमस न्यूज़पेपर. तिलक रोड इन न्यूज़पेपर केसरी. But what happened after that? In 1908 led to his imprisonment. यानी कि 1907 में किसको देश निकाला दे दिया गया था? पंजाब रिवोल्यूशनरीज को. But in 1908 Tilak was also imprisoned यानी कि to put into jail. So what happened against that? Led to widespread protest all over India. यानी कि all over India में क्या स्टार्ट हो गए? मूवमेंट स्टार्ट हो गए, आंदोलन स्टार्ट हो गए. Thus, so what we can say that कि print culture can be used to create नेशनलिज्म फीलिंग्स. यानी कि प्रिंट कल्चर के द्वारा हम लोगों के अंदर क्या फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं? नेशनलिज्म फीलिंग, यानी कि अपनी कंट्री के प्रति देशभक्ति भावना. तो स्टूडेंट्स, आवर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर completed. I hope you will understand. If any student didn't understand, please watch all the video again and prepare the notes and frame the question and answer related to NCERT book. Thank you.